सुल्तनत लिटरेचर पे बात करते हैं हम लोग। दिल्ली सुल्तनत 1206 to 1526 marked a significant transformation of India's cultural and literary landscape, ठीक, introducing Persian literature, music and new linguistic traditions. The period witnessed remarkable contributions from scholars, poets and historians, many of whom were court historians and musicians, patronized by ruling sultans. आमिर खुसरो, तूतीय हिंद, पैरट ऑफ इंडिया. Abul Hasan Yamunuddin Khusro, popularly known as Amir Khusro, was 13th century poet, musician, and scholar. Born in 1253 AD at Patiali, present day Kasganj district, उत्तर प्रदेश. कासगंज में उत्तर प्रदेश में. ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिगर ऑफ इंडो पर्शियन लिटरेचर. इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा? पर्शियन एंड हिंदवी लिटरेचर. खुसरो वाज ए पायनियर ऑफ ब्लेंडिंग पर्शियन एंड इंडियन लैंग्वेज. इन्होंने मिलाया था पर्शियन और इंडियन लैंग्वेज को आपस में, क्रिएटिंग एन अर्ली फॉर्म ऑफ हिंदवी, प्रोटो हिंदी. ही इज क्रेडिटेड विथ इनिशिएटिंग द सबके हिंदी और हिंदुस्तानी स्टाइल, सबके हिंदी और हिंदुस्तानी स्टाइल ऑफ पर्शियन पोएट्री, रिफ्लेक्टिंग इंडियन थीम्स एंड इमेजरी. हिस्टोरिकल एंड लिटरेरी वर्क्स. हिज famous composition include Miftah ul Futuh, a historical text on the victories of Jalaluddin Khilji. मिफ्ताह उल फुतूह लिखा था अमीर खुसरो ने जलालुद्दीन खिलजी के विक्ट्रीज पे. फिर खजाइन उल फुतूह, तारीख अलाई, क्रॉनिकल्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी रीन, ठीक है. अशिका नु सिफ्र और तुगलक नामा, सेलिब्रेटिंग वेरियस सुल्तान्स एंड देयर अचीवमेंट्स. अशिक नु सिफ्र और तुगलक नामा. म्यूजिक एंड कव्वाली. खुसरो इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ कव्वाली, ए डिवोशनल म्यूजिक फ्रॉम ब्लेंडिंग पर्शियन, अरबिक एंड इंडियन इन्फ्लुएंसेस. He also contributed significantly to classical Indian music, introducing new ragas and musical styles. Instruments like tabla and sitar are often attributed to his innovations, though their exact origin remain debated. Tabla and sitar. Khusro's influence on Indian culture. His poetry inspired later literary traditions, including Urdu literature. He was the first Muslim ruler who openly identifies as an इंडियन. मतलब ये पहले ऐसे थे जो खुद को क्या कहते थे कि मैं इंडियन हूँ. डेमोन्स्ट्रेटिंग फ्यूजन ऑफ पर्शियन एंड इंडियन कल्चर्स. पर्शियन लिटरेचर एंड इट्स डेवलपमेंट. पर्शियन लैंग्वेज बिकेम द ऑफिशियल कोर्ट लैंग्वेज ऑफ दिल्ली सुल्तान्स आफ्टर इट्स इस्टेब्लिशमेंट. हो ये ऑफिशियल कोर्ट लैंग्वेज था. मेनी हिस्टोरिकल एंड लिटरेरी वर्क्स वेयर रिटन इन पर्शियन, फॉस्टरिंग द ट्रेडिशन ऑफ कोर्ट क्रॉनिकल्स एंड बायोग्राफिकल अकाउंट्स ऑफ रूलर्स. जैसे तबाकाते नसीरी, रिटन बाय मिनहाज उस सिराज 1260 AD. मिनहाज उस सिराज, तबाकाते नसीरी 1260 AD. दिस इज डिटेल्ड हिस्ट्री ऑफ घुरीद डायनेस्टी एंड अर्ली दिल्ली सुल्तान्स, डेडिकेटेड टू सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद. तारीख फिरोज शाही, ए हिस्टोरिकल क्रॉनिकल बाय जियाउद्दीन बरानी, कवरिंग द रीन ऑफ बलबन, अलाउद्दीन खिलजी एंड तुगलक रूलर्स. फिरोज शाही, तारीख फिरोज शाही, ए हिस्टोरिकल क्रॉनिकल बाय जियाउद्दीन बरानी. तहकीक नसीरी मिनहाजुस सिराज ने लिखा घुरीद डायनेस्टी और अर्ली दिल्ली सुल्तान्स के बारे में, जैसे सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद. और तारीख फिरोज शाही, ए हिस्टोरिकल क्रॉनिकल बाय जियाउद्दीन बरानी, कवरिंग द रीन ऑफ बलबन, अलाउद्दीन खिलजी एंड तुगलक रूलर्स. बलबन, कवरिंग द रीन ऑफ बलबन, अलाउद्दीन खिलजी एंड तुगलक रूलर. ताजुल मसीर, रिटन बाय सबरुद्दीन महमूद बिन हसन निजामी. इट प्रोवाइड्स एन अकाउंट ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक्स रूल. ताजुल मसीर, ताजुल मसीर, ताजुल मसीर.
ताजुल मसीर, Sabruddin Mahmud bin Hassan Nizami. It provides an account of Qutbuddin Aibak's rule. Tarikh-e Mubarak Shahi, authored by Yahya bin Ahmad Sarhindi. It is a primary source of history of Sayyid rulers, composed under Sayyid Mubarak Shah patronage. सैयद मोहम्मद शाह के पैट्रोनेज तारीख मुबारक शाही, तारीख मुबारक शाही, authored by Yahya bin Ahmad Sarhindi. It is primary source of history of Sayyid rulers, composed of Sayyid Mubarak Shah's patronage. Contribution of regional patron Rana Kumbha. Rana Kumbha 1433 to 1468 AD was a Rajput ruler of Mewar, known for his patronage of music, art and literature. He composed works on Indian classical music, including Sangeet Mimamsa and Sangeet Raj. Sangeet Mimamsa and Sangeet Raj. His reign witnessed a cultural revival in Rajasthan, with temples, inscription and literary works flourishing. Rana Kumbha was a Rajput ruler of Mewar, known for his patronage of music, art and literature. संगीत मीमांसा और संगीत राज ने इन्होंने वो किया. His reign witnessed a cultural revival of Rajasthan, with temples, inscription and literary works flourishing. Firoz Shah Tughlaq and his writing. Firoz Shah Tughlaq 1351 to 1388 AD, the ruler of Tughlaq dynasty, wrote his memoirs Futuhat-e Firoz-e-Shahi, a self-authored account highlighting his governance, policies and administrative reforms. He also translated Hindu scriptures into Persian, promoting cultural exchange. Influence of Persian literature. Persian remained the dominant language for official documentation, influencing later Mughal and British administrative system. Delhi Sultan introduced new form of record keeping such as Diwan-e-Arj, military department, Diwan-e-Insa, correspondent department, Diwan-e-Risalat, foreign affairs. Many terminologies from Persian, Diwan, Wazir, Sikdar, entered Indian governance system. Just Diwan, Wazir or Sikdar. Amir Khusro's contributions are crucial for understanding India's composite culture and Hindu linguistic evolution. Persian historical texts are valuable primary source for medieval Indian history. Delhi Sultan's literary and administrative influence shaped later Mughal and British governance structure. Cultural fusion during this period laid the groundwork of Indo-Islamic architecture, literature and music. Who was the famous author of Kitabul Hind? Al-Baruni. Kitabul Hind यानी कि तहकीक हिंद was written by Abu Rayyan Al-Baruni. किताबुल हिंद अल-बरूनी ने लिखा था. पर्शियन स्कॉलर, हिस्ट्रियन, मैथमेटिशियन एंड पॉलीमैथ. ही केम टू इंडिया विथ महमूद ऑफ गजनीज इन्वेजन, मतलब मोहम्मद गजनी के साथ ही आया था. एंड एक्सट्रीमली स्टडीड इंडियन सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर, फिलोसफी एंड साइंस. His work provided a detailed account of Indian civilization covering Hindu scriptures, Ved Puran, caste system, language, astronomy and mathematics. First objective and analytical account of India by foreign scholar. तो अल-बरूनी ने किताबुल हिंद लिख के इंडिया के बारे में बताया. Comparative study between India and Greek philosophies. Introduction of Sanskrit text to the Islamic world. इन्होंने अल-बरूनी ने ही किया था. ये किसके साथ आए थे? मोहम्मद गजनी के साथ 1017 AD में. ठीक, फिर हम लोग आते हैं हसन निजामी रोट ताजुल मसीर. हसन निजामी ने क्या लिखा? ताजुल मसीर, ए हिस्ट्री ऑफ किताबुद्दीन ऐबक्स रूल, कुतुबुद्दीन ऐबक्स 2006 to 2010 AD. हसन निजामी ने लिखा, कवरिंग अर्ली दिल्ली सुल्तान. ठीक, हसन निजामी ने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में लिखा.
मतलब शुरुआती दिल्ली स्लेव डायनेस्टी, जो स्लेव डायनेस्टी थी उसकी। मिनहाज उस सिराज, इन्होंने क्या लिखा, तबकाते नासिरी, ए हिस्टोरिकल टेक्स्ट कवरिंग घुरीद रूलर ममलूक एंड अर्ली खिलजीज। मिनहाज उस सिराज। शमसे सिराज अफीफ ने क्या लिखा, तारीख फिरोज शाही, डिटेलिंग रीना फिरोज शाह तुगलक। शमसे सिराज अफीफ। हु इज़ द ऑथर ऑफ तहकीक हिंद। तहकीक हिंद या किताबुल हिंद इज ए हिस्टोरिकल जियोग्राफिकल एंड कल्चरल एनालिसिस ऑफ इंडिया रिटन बाय अल-बरूनी। अल-बरूनी स्टडीड Indian text, learned Sanskrit and translated many Hindu scriptures into Arabic. Hindu social structure, वर्ण सिस्टम, जाति धर्म कर्म। वर्ण जाति धर्म कर्म मतलब हिंदू सोशल स्ट्रक्चर के बारे में, वर्ण सिस्टम, जाति धर्म कर्म, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, आयुर्वेद, कंपैरिजन बिटवीन इंडियन एंड ग्रीक थॉट। अल-बरूनी ने संस्कृत भी सीखा। जियाउद्दीन बरानी ने क्या लिखा, तहरीक फिरोज शाही, ए हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ दिल्ली सुल्तान फ्रॉम बलबन टू फिरोज शाह तुगलक। तहरीक फिरोज शाही, जियाउद्दीन बरानी, ए हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ दिल्ली सुल्तान फ्रॉम बलबन टू फिरोज शाह तुगलक। जियाउद्दीन बरानी। जियाउद्दीन बरानी wrote Jiauddin Barani wrote Tariq-e-Firoz Shahi, a historical record of Delhi Sultan from Balban to Firoz Shah Tughlaq. Amir Khusro, a Persian poet and historian, wrote Tughlaq-Nama, Khazan-ul-Futuh और but not तहकीक-ए-हिंद। अमीर खुसरो ने तुगलकनामा, खजाने-उल-फुतूह लिखा। अल-बरूनी। अब्दुल रज़्ज़ाक, a Persian ambassador and historian from Timurid Persia, who visited India and wrote about विजयनगर एम्पायर। अब्दुल रज़्ज़ाक ने विजयनगर एम्पायर के बारे में लिखा। अमीर खुसरो वाज बॉर्न इन पटियाली या कासगंज डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश। अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो, नोन एज आमिर खुसरो, 1253 to 1325 AD, was born in Patiali, Kasganj, Uttar Pradesh. He was court poet under several Delhi Sultan. अमीर खुसरो किसके अंदर, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी एंड गियासुद्दीन तुगलक। बलबन, खिलजी और तुगलक मतलब इसने स्लेव डायनेस्टी भी देखा, खिलजी डायनेस्टी भी देखा और तुगलक डायनेस्टी भी देखा। ही वॉज कॉल्ड तूतीय हिंद, पैरट ऑफ इंडिया। अमीर खुसरो ही पायनर्ड हिंदवी लिटरेचर, कव्वाली एंड सूफी पोएट्री। कव्वाली भी वो किया, सूफी पोएट्री भी किया और हिंदी लिटरेचर भी। आगरा फाउंडेड बाय सिकंदर लोदी 1504 AD में। बाराबंकी, रीजन ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस बट अनरिलेटेड टू खुसरो। इटावा, हिस्टोरिकल टाउन ऑफ यूपी। Who among the following called himself the parrot of India? Amir Khusro related himself as Tutiya Hind, parrot of India, due to his immense literary contribution in Persian, Hindi and Arabic. He composed Masnavis, a poetic narration. Masnavis, Amir Khusro, Masnavis, riddles and couplets blending Indian and Persian tradition. तुगलकनामा किस पे? ऑन गियासुद्दीन तुगलक। खजाने अल फुतूह, अलाउद्दीन खिलजी, ऑन अलाउद्दीन खिलजी। किरान उस सदें, ऑन द मीटिंग ऑफ बुगरा खान एंड बलबन। तुगलकनामा ऑन गियासुद्दीन तुगलक। खजान अल फुतूह ऑन अलाउद्दीन खिलजी। तुगलकनामा ऑन गियासुद्दीन तुगलक। खजान उल फुतूह ऑन अलाउद्दीन खिलजी। किरान उस सदैन ऑन द मीटिंग ऑफ बुगरा खान एंड बलबन। अरे यार, तुगलकनामा गियासुद्दीन तुगलक, खजान अल फुतूह अलाउद्दीन खिलजी, किरान उस सदैन ऑन मीटिंग ऑफ बुगरा खान एंड बलबन। कुतुबन, medieval poet who wrote मीरागवती 16th century. उस्मान, अरे यार, अमीर हसन, a poet and friend of Amir Khusro. Amir Khusro played a pioneering role in development of Khadi Boli. Amir Khusro popularized Khadi Boli
which later evolved to Urdu and Hindi. He experimented with Persian and Hindi, creating an early Indianized Persian poetry style, Sabake Hind, Sabke Hind, Sabke Hind. His contributions were crucial in the formation of modern Hindustani language. Sabke Hind, Khadi Boli. Braj Bhasha, an older form of Hindi mainly associated with Krishna Bhakti literature. ब्रज भाषा जैसे सूरदास और तुलसीदास ने वो किया था. अवधि, तुलसीदास इन रामचरितमानस, अवधि में लिखा गया है रामचरितमानस, 16th century. भोजपुरी इज रीजनल डायलेक्ट नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय खुसरो. Impact of Persian literature in India. Persian was the official language of administration during Delhi Sultanate and Mughal period. Many historical accounts, travelogues, and administrative documents were written in Persian. Qawwali and Indian music. Amir Khusro pioneered Qawwali, a fusion of Persian, Arabic, Turkish, and Indian musical tradition. He contributed to classical Hindustani music and developed new rag, जैसे यमन, सुहनी, सरपर्दा. He introduced sitar and tabla, debatable but widely credited. Amir Khusro, sitar and tabla. Persian historians like Barani, Minhajus Siraj and Afi provided valuable insight into Delhi Sultanate governance, military strategies and economic conditions. Who among the following witnessed the reign of 7 Sultan of India? आमिर खुसरो और शेख निजामुद्दीन औलिया. आमिर खुसरो और शेख निजामुद्दीन औलिया. आमिर खुसरो 1253 to 325 and Sheikh Nijamuddin Auliya 1238 to 1325 lived during Delhi Sultanate and witnessed the rule of more than 7 Sultan. Amir Khusro served as a poet and historian in the court of several sultan. किसके किसके? गियासुद्दीन बलबन, मुइजुद्दीन कायकुबाद, जलालुद्दीन खलजी, अलाउद्दीन खलजी, मुबारक शाह खलजी, गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक. ठीक, इन सातों के दरबार में इन्होंने काम किया. मतलब स्लेव डायनेस्टी में भी इन्होंने काम किया, खिलजी के भी 3 राजाओं के बीच काम किया और फिर तुगलक के भी बीच काम किया इन्होंने. शेख निजामुद्दीन औलिया ए सूफी संत. अब चिश्ती ऑर्डर. निजामुद्दीन औलिया किस ऑर्डर के हैं? चिश्ती ऑर्डर. ऑल्सो लिव्ड थ्रू द सेम पीरियड एंड हैड स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस ओवर मेनी रूलर्स. ठीक है. ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती फाउंडेड चिश्ती सूफी ऑर्डर इन इंडिया but lived much earlier 1142 to 1236 AD and was associated with Muhammad Ghori and Qutbuddin Aibak. Not the 7 Sultan mentioned above. Khwaja Moinuddin Chishti मोहम्मद गोरी और कुतुबुद्दीन ऐबक से एसोसिएटेड थे. ठीक है. The famous poet Amir Khusro was associated with Ghiyasuddin Balbal, Khilji और तुगलक. Amir Khusro began his career in the court of Ghiyasuddin Balban. 1266 AD to 1287 AD. Balban was a powerful ruler of the slave dynasty, known for his strict administration, military reforms, and Turkish nobility policies. Khusro was later associated with Kaygubad, Jalaluddin Khilji, Alauddin Khilji, Mubarak Shah Khilji, Ghiyasuddin Tughlaq, Muhammad bin Tughlaq. Famous work during his association with Delhi Sultan खैजुन उल फुतूह अलाउद्दीन खिलजी, तुगलक नामा गियासुद्दीन तुगलक, किरान उस सदैन कैकुबाद, किरान उस सदैन कैकुबाद. तुगलक नामा गियासुद्दीन तुगलक, कैजान उल फुतूह अलाउद्दीन खिलजी, किरान उस सदैन कैकुबाद, किरान उस सदैन कैकुबाद.
Nawab Asfadullah was a Nawab of Awadh 1775 to 1797, much later than Khusro period. Muhammad Shah Rangila 1792 to 1748 AD, a Mughal ruler. Qutbuddin Aibak 1206 to 1210 फाउंडेड दिल्ली सुल्तान, लेकिन बलबन के रीन में ये आए थे, मतलब वो हुए थे दरबार से। विच फेमस पोएट आमिर खुसरो लिव्ड एट ए कोर्ट ऑफ, तो अलाउद्दीन खिलजी। देखिए बलबन के बाद वाले राजा से तुगलक तक मतलब खुसरो थे। अलाउद्दीन खिलजी 1296 to 1316 was one of the most powerful ruler of Delhi Sultan. Amir Khusro was his first poet and historian. Major achievement of Alauddin Khilji: market control policies and price regulation, expansion of Delhi Sultan, Deccan Campaign, conquest of Gujarat, Ranthambore, Chittor and Malwa. Ranthambore, Chittor and Malwa. Alauddin Khilji, Ranthambore, Chittor and Malwa. Military reform, standing army, use of branding system. Khusro's famous work during Alauddin Khilji's reign: Asika, a romantic masnavi, और Khazane ul Futuh, glorifying Khilji's victories. Iltutmish ruled much later, not contemporary with Khusro. Iltutmish related much earlier, not contemporary with Khusro. Muhammad bin Tughlaq 325 to 351 AD. Khusro died in 1235, right after Muhammad bin Tughlaq assassination. Qutbuddin Aibak 1206 to 1210 AD ruled long before Khusro's birth. ठीक है। Amir Khusro was court poet of Alauddin Khilji. Amir Khusro was officially court poet of Alauddin Khilji and played a major role in chronicling his conquest and administration. He was also associated with other sultans जैसे, but his most notable work were during Khilji's reign. Muhammad bin Tughlaq Khusro died shortly after his assassination. Sher Shah Suru belonged to a different era. Humayun, Mughal ruler not associated with Khusro. Amir Khusro मतलब मोहम्मद बिन तुगलक से पहले इनकी देहांत हो गया था। Amir Khusro wrote extensively during Alauddin Khilji rule. His poetry glorified Khilji's victories against Mongols, his military strength and administrative efficiency. Muhammad bin Tughlaq came to power in 1325 AD, shortly before Khusro's death. Ibrahim Lodi 1517 to 1526 AD ruled much later, not connected to Khusro. Firoz Shah Tughlaq 1351 to 1388 AD, after Khusro's death. Amir Khusro was poet, historian and musician. Poet, wrote in Persian and Hindi, developed Sabake Hind, Hindustani style. Historian chronicled the reigns of Balban, Khalji and Tughlaq. Musician, developed new rag. Yaman and Suhni contributed to Qawwali. Father of new Persian poetry, Sabake Hindi or Hindustani style, was Amir Khusro. He blended Persian, Arabic and Indian linguistic tradition, creating a distinct Persian poetry style in India. जियाउद्दीन बरानी, हिस्टोरियन रॉक, तारीख फिरोज शाही, अफीक भी राइटर थे, लेकिन इसामी रॉट फुतूह उस सलातनी ड्यूरिंग मोहम्मद बिन तुगलक रूल। इसामी, अरे यार क्या क्या कोई याद रखे। फादर ऑफ हिंदी खड़ी बोली आमिर खुसरो. ही डेवलप्ड अर्ली हिंदवी प्रोटो हिंदी लिटरेचर कंट्रीब्यूटिंग टू खड़ी बोली. मलिक मोहम्मद जैसी रॉट पद्मावत इन अवधि. मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत को अवधि में लिखा. कबीर भक्ति पोएट रॉट इन वर्नाकुलर डायलेक्ट्स.
पंचमेल खिचड़ी कहा जाता था इनको, इनके लैंग्वेज को। अब्दुल रहीम खान खनान, मुगल इरा पोएट। The seventh of both Hindi and Persian language was Amir Khusru. Khusru was fluent in Persian and Hindi, composing poetry in both. Akbar promoted Persian but was not a scholar himself. तानसेन कोर्ट म्यूजिशियन थे। बैरम खान मुगल मिलिट्री कमांडर थे। ठीक। आमिर खुसरो's contribution to Persian and Hindi literature. Amir Khusro was court poet of Alauddin Khilji. Amir Khusro was the official court poet of Alauddin Khilji, 1296 to 1316. He composed poetry, historical chronicle, and Masnavis, long narrative poems, glorifying Khilji rules. His work documented Alauddin Khilji's military campaign, economic policies, and administrative innovation. उन्होंने क्या लिखा था? खैजुन उल फुतूह, ट्रेजर ऑफ विक्ट्रीज डॉक्यूमेंटिंग खिलजी कॉन्क्वेस्ट। खैजुन उल फुतूह, आशिका ए रोमांटिक मसनवी, तुगलकनामा, लेटर डेडिकेटेड टू गियासुद्दीन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, मतलब इनके आने हैं, मतलब जैसे ही राजगद्दी पे बैठे उसके बाद इनका देहांत हो गया। शेरशाह सूरी 1540 to 1545 belonged to a different era. Sur Empire unrelated to Khusro. Humayun 1530 to 1556, a Mughal ruler who had no association with Khusro. Amir Khusro was associated with whose reign among the following to Alauddin Khilji was one of the most significant patron of Amir Khusro. Khusro wrote about Alauddin's military strategy, Mongol invasion and economic policies. Alauddin Khilji implemented market regulations, taxation reform and introduced a standing army to strengthen the empire. Khusro's work helped in glorifying Alauddin rule and achievements. Muhammad bin Tughlaq. Khusro died. Muhammad bin Tughlaq. Khusro died in 1325, right after Muhammad bin Tughlaq took the throne. 1525 में मतलब sorry Muhammad bin Tughlaq Khusro died in 1325, right after Muhammad bin Tughlaq took the throne. Ibrahim Lodi 1517 to 1526 AD, a much later ruler from Lodi dynasty. Firaj Shah Tughlaq came to power after Khusro's death. आमिर खुसरो was a poet, historian and musician. सही है। मतलब ऐसे पोएट थे जिन्होंने पर्शियन और हिंदी दोनों लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। डेक्कन और तमिलनाडु का। डेक्कन और तमिलनाडु। तो आमिर खुसरो was a poet, historian and musician. Historian, chronicle the reign of Balban, Khilji and Tughlaq. Musician, contributor to Hindustani classical music. He is credited with innovation like Qawwali, Tarana and New Raga. Yaman Suhani Saparda, associated with development of sitar and tabla. Father of new Persian poetry style Sabake Hind or Hindustani style. Amir Khusro
Pioneered the Sabke Hindustani style of Persian poetry. He combined Persian, Arabic, Turkish, and Indian linguistic tradition, gave rise to Hindu poetry. He famously said, "Na labje Hinduist aj Farsi kam, na labje Hinduist aj Farsi kam." मतलब the word of Hindi are not lesser than those of Persian. Ziauddin Barani wrote Tahrik-e-Firozshahi Shahi, but was not a poet. Afiq Ismami. Who among the following is known as father of Hindi Khadi Boli? Amir Khusro. Amir Khusro played a major role in evolution of Khadi Boli, which later developed in modern Hindi and Urdu. He was among the first to write to Hindavi, early form of Hindi. His dohe, couplets, and riddles in Hindi reflect the spoken language of that time. खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो उबरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार. Meaning the river of love flows in rivers. The one who floats is lost, but the one who drowns is saved. Malik Muhammad Jaisi wrote Padmavat 1540 AD in Awadhi. Kabir wrote in Bhojpuri and Sant Bhasha. Abdul Rahim Khane Khan, Mughal era poet but not a pioneer of Khadi Boli. The Samant, both language Hindi and Persian, Amir Khusro, was fluent in Persian and Hindi, Proto-Hindi. He seamlessly blended Persian, Arabic, and Indian linguistic style in his poetry. He is often regarded as first poet in Hindustani literature. He wrote to both Persian and Hindi dialect. Akbar 1542 to 1605 AD patronized Persian literature but was not a poet himself. Tansen 1493 to 1586. Court musician of Akbar had no contribution in literature. Bairam Khan 1501 to 1561, Mughal general and regent but not a poet. ठीक, तो ये हम लोग का ख़त्म होता है. थैंक यू, बाय बाय. अब अगले वाले से चलते हैं.